वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम इसको बेसिक नॉलेज ऑफ टॉपिक की जो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रेफरेंसेस को नोट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड देन उसके बाद हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इस टॉपिक का, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान का। तो सबसे पहले एक रसूल बख्श रईस की एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद करनी चाहिए, ये लिखनी चाहिए, generations after generations coming from the same feudal tribal social background, Pakistan's political elites have promoted political values that run counter to a nation and state building। और उसके बाद है पॉलिटिकल पोलराइजेशन है क्या बेसिकली। ये एक डिवीजन्स ऑफ अ सोसाइटी, जिसे कहें हम डिवीजन्स ऑफ अ पॉलिटिकल वैल्यूज़ या पॉलिटिक्स की डिवीजन के पॉलिटिक्स की जो है ना, सब इसकी आसान ज़बान में ये कि हम इसकी डिवीजन है, मीन्स पॉलिटिकल पोलराइजेशन मीन्स डिवीजन। Political polarization refers to the division of society, political discourse along ideological or partisan lines, where individuals or groups hold extreme and opposing views on political issues. In the context of Pakistan, political polarizations can be understood through the following concepts. इसमें सबसे पहले आइडियोलॉजिकल डिवीजन्स है क्या, जैसे पहले मैंने आपको कहा कि पोलराइजेशन मीन्स कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन किसको कहते हैं, पॉलिटिकल डिवीजन को, सोसाइटी की डिवीजन को। उसमें सबसे पहले आइडियोलॉजिकल डिवीजन आ गई। जैसे पाकिस्तान एक डाइवर्स पॉलिटिकल लैंडस्केप पे है। डिवीजन्स प्राइमरली स्टीम टू अ डिफरेंट रिलीजियस बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे, रीजनल आइडेंटिटीज पे हम डिवाइड है। नंबर टू पे एथनिक एंड रीजनल पोलराइजेशन। एथनिक एंड रीजनल पोलराइजेशन ऐसे के लाइक पंजाबीज, सिंधीज, बलोचीज, पश्तून्स एंड मुहाजिर्स में हम इसमें जो है ना डिवाइड है, पोलराइज है। ethnic and regional disparities often contribute to a political polarization। हमेशा एथनिक जो पोलराइजेशन है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को डिस्पैच करती है ना। उसके बाद थर्ड पे है पॉलिटिकल पार्टीज एंड फैक्शंस। जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि देयर आर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, बट अगर हम देखेंगे तो यूएसए हो गया, चाइना हो गया, मॉस्को हो गया, इसमें ना आपको एक काउंटिंग नंबर पे ना पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगी। तो ये भी एक फैक्टर है कि पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा हैं तो पॉलिटिकल पोलराइजेशंस भी है इसकी वजह से। देखें ना, रिलीजियस एंड सेक्टेरियन पोलराइजेशन। रिलीजन्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ठीक है, एक रिलीजन्स भी हम डाइवर्स सेक्ट्स में डिवाइड हैं, सच एज सुन्नी, शिया, अहमदिया के जो मसले हैं। ठीक है, सेक्टेरियन टेंशंस है, डिफरेंसेस इन रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस कैन कंट्रीब्यूट टू अ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। उसके बाद है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन बबल्स। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन बबल्स ऐसे कि आपने देखा होगा कि कुछ चैनल्स किस पार्टी को सपोर्ट करें, कुछ चैनल किस पार्टी को सपोर्ट करें। तो ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है कि जो है ना, जो है ना, इसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है। लाइक जैसे कोई जो भी किसी के सपोर्टर है तो वो वही चैनल देखेंगे जिसमें उनकी पार्टी की जो भी है ना, उनकी पार्टी के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद हिस्टोरिकल एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में फैक्टर्स भी हैं, लाइक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हुई हैं, करप्शन है, गवर्नेंस फेल्यूर है, एंड डीपन डिविजन्स एंड इंक्रीज पोलराइजेशन अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स भी है। उसके बाद है बुक रेफरेंसेस। बुक रेफरेंसेस में हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान में हम 5 बुक के जो है ना रेफरेंसेस देंगे। सबसे पहले है दी पाकिस्तान पैराडॉक्स, क्रिस्टोफी की है, इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, द पाकिस्तान पैराडॉक्स, इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। This book examines the political, social, and religious dimensions of a Pakistan society and explores the paradoxical nature of its state institutions. It delves into the factors contributing to a political polarizations in the country. उसके बाद है नंबर 2 पे एथनिक आइडेंटिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान बाय सफदर महमूद। इसमें सफदर महमूद ने कहा है कि फोकसिंग ऑन द इश्यूज ऑफ एथनिक एंड रीजनल पोलराइजेशंस, this book analyzes the dynamics of ethnic identity and its impact on national integration in Pakistan. It explores how ethnic divisions contribute to a political
polarizations and provides insights into the potential solutions. उसके बाद the struggle for Pakistan, a Muslim homeland and global politics by Aisha Jalal. ये एक वन ऑफ द जो भी कहें ना हम सीएसएस की बेस्ट सीएसएस के हवाले से बेस्ट बुक है ना पॉलिटिक्स के हवाले से दिस बुक प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव historical analysis of Pakistan's formations and the subsequent political developments. It explores the ideological divisions, ethnic tensions, and regional disparities that have shaped the country's politics and contributed to the polarizations. उसके बाद है नंबर 4 पे है पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी इन पाकिस्तान the Baloch, Sindhi and Mohajir ethnic movements by Farhan Hanif Siddiqui. Focusing on specific ethnic movements in Pakistan, this book examines the political mobilizations of the Baloch, Sindhi and Mohajir communities. It delves into the causes and the consequences of ethnic polarizations and its impacts on the country's political landscape. नंबर 5 पे है फेथ एंड पावर religion and politics in the Middle East by Bernard Lewis. While not specific to the Pakistan, this book offers a valuable insights into the intersections of religion, politics in Muslim majority countries. It discusses the role of religious ideologies, sectarian divisions in shaping political polarizations in the region. And अब हम स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड पे कि करंट अफेयर्स के हवाले से ना कैसे टॉपिक आएगा उसमें सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलिटिकल पोलराइजेशंस जैसे भी हमने पहले एक कोटेशन दी थी ठीक है उसमें उसके बाद polarization means an increasingly zero-sum disagreement of a political views on a policy issues and a more dangerously on the very rules of a political system. क्या increasingly zero-sum disagreement of political views means कि political divisions है उसके बाद the type of political polarizations क्या है polarizations can take a place between a political party leaders and their associate politicians. A second form that it can take is the more widespread variety, i.e., between regular citizens belonging to a different social, economic, or a political groups. In many cases, the first type of polarizations lead to a second type. उसके बाद example of polarizations है example of a political polarizations could be if the politicians or the citizens disagree on the status that should be given immigrants on or religious minorities. Number two पे whether the conduct and results of an elections are deemed fair. ठीक है ना एग्जाम्पल में उसके बाद why should polarizations be a matter of concerns. In any democracy, agreement on a basic rules of how someone is elected and how someone is taken out of office is necessary among all competing factors. जिसे न किसी भी डेमोक्रेसी में कैसे रूल किया जाता है कैसे इलेक्ट होते हैं और कैसे उसको इलेक्शंस के बाद उसको कैसे अपने रूल को बरकरार कैसे रूल को लेके चलते हैं ठीक है otherwise the system does not function. It is also important that a range of divergent views within the appropriate limits be allowed to exist in the political system in order to provide representations. Otherwise, autocracy will prevail, and in most cases, a lust of violence among those who are being excluded will become a new normal. Polarizations among leaders in Pakistan. पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है डिवीजन है अमंग लीडर्स में ज़्यादा है लेकिन कोई भी लीडर जो है दूसरे को कंसेंसस नहीं है लीडर्स के बीच में कंसेंसस नहीं है लाइक इमरान खान जो है ना वो PMLN के ये शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है शहबाज शरीफ इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलता है और इमरान बिलावल इमरान खान के ये ऐसे ही चलता है जी कंसेंसस नहीं है ना इन पाकिस्तान पॉलिटिशियंस आर react each others throughout all day on TV, on jalsas, stages, on a social media. For example, former PM Imran Khan disagrees with the rules of the system and repeatedly talks about the alleged mercy of a current government. In the past, he was a receiving end of the selected jibe फ्रॉम दी करंट रूलिंग कोalitions जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो है इमरान खान उनको कह रहा है कि ये एलिजिट मेसी करंट गवर्नमेंट है
और जब इमरान खान हुकूमत में था तो वो कहते थे कि ये एक सिलेक्टेड पीएम है। ठीक है। उसके बाद पोलराइजेशन अमंग सपोर्टर्स, मासेस में भी पोलराइजेशन है। ठीक है। द मोर डेंजरस पोलराइजेशन एग्जिस्ट बिटवीन द सपोर्टर ऑफ डिफरेंट पार्टीज. Social media these days is essentially a spectacle of competing trends and exchanges of abuses. Anecdotally, once hears about families' ties and friendship put under pressures because of differences over the people's support and degree to which they think a certain party is worth supporting and how loudly. ये एक वन ऑफ द जो मासेस में पोलराइजेशन है ना, वो डिफरेंट है। ये इसको जो है ना, इसमें टेंशन्स भी क्रिएट होते हैं, इसमें वायलेशंस भी क्रिएट होते हैं अमंग मासेस में। ठीक है। उसके बाद है हाउ डेंजरस इज दिस पोलराइजेशन in terms of actual ideas, it seems to be a bit shallow. The only idea that is currently important is the result of upcoming elections. The rest is a debate about the competence and who can implement policies and run institutions better than the other. Another measure of polarization is whether voters of a one party would think of voting for another. Past data and surveys shows that voters have switched loyalties between 2013 and 18. When asked if PTI was not available as an opinion, a plurality of the voters said they would vote for PML and vice versa. उसके बाद है व्हाट इज causing polarizations among politicians and among citizens. The cause of this polarizations is the frustration of regular citizens due to their unmet expectations from traditional political parties. They are palpable anger at the economic crisis, the lack of the transparency in politics, at the continued existence of a dynastic politics, and at the lawless status of the country globally. Is this polarization unprecedented? The short answer is no. It is not. In 1960s, the 1960s, 70s were a far more polarized time when ideological conflicts between socialists and conservatives in Pakistan are the nature of economy, as well as ethnic conflicts between East and West Pakistan over the nature of a federal system took place. The 1970s and 77 elections were bitterly fought with the former leading to a civil war and secession and the latter seeing at least 350 dead over a 6-month period. 20 years later, a decade of polarized politics ended in the 1977 elections, which saw a PP voters refuse to turn up together due to a disenchantment with their leaders, but also a flat refusal to vote for the other option. Sorry. At the conclusion में हम ये लिखेंगे in all past cases, the outcomes of such periods of polarization have been seen only a one entity gain power at the expense of all others. Reducing the political temperature today may not appear to be in any one actor's interest, but it is actually in long-term interest of everywhere. Thank you.